Okay, so here we are going to start with reversible reaction, and these are such reactions जो कि क्या हो सकते हैं बच्चों. You can see this over here. The word is reverse, right? The reactions that can be reversed are known as reversible reactions, right? अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो अभी तक हमने बहुत सारे reactions पढ़े हैं, just like we were talking about in acid and bases. We are reacting HCl with any alkali, so they will form what? Salt and water, right? Just like this. This is one of the reaction, right? And for suppose if you talk about thermal decomposition, so you have calcium carbonate, you are heating this and it is going to be breaking down into calcium oxide and carbon dioxide. This is also one of the reaction. If you talk about periodic table, so you are adding sodium into the water, right? And you will having sodium hydroxide and hydrogen gas over there. This is also one of the reaction that you learn in periodic table. Just like if you talk about chlorine is passing through potassium bromide, it is displacing bromide from the salt and forming potassium chloride and bromine. So these all reactions are one-way reactions. They always in the forward direction, right? These are just simple or single reactions, right? So these all are actually irreversible reaction, जो कि अब तक आप लोगों ने पढ़े हैं. They all are irreversible reactions, right? You see the reactions and they are just going towards in the one direction. They are all forward reactions, right? Aapne reactants dale, product ban gayi, that's all. But in chemistry, we have some reactions that can be like, for suppose, if you are adding hydrogen gas and nitrogen gas together, right? They will react and form ammonia gas. They will react and form ammonia gas. And once the ammonia gas start forming, it start decomposing as well, right? So such reactions in which the reaction is on both sides. For suppose reactants are forming product, and once the product start forming, it start breaking down as well, right? And there will be some middle balance over there. Some product and some reactant will stay over there, and the reaction has been going to be stabilized, right? So these type of reactions are also exist in chemistry, and they will known as reversible reaction. ठीक है बच्चों? There are two different types of reactions. One is irreversible reaction, जो कि अब तक आप पढ़ते आ रहे थे, and this one is a new one, which is reversible reaction, a reaction which can go back as well, right, बच्चों? Yes, everyone. Yes. Okay. So actually, if you talk about this reaction, so this reaction having two parts. The one is when then hydrogen reacting with nitrogen, this is, you can say that the reactants are reacting together and forming what? Product. This is the forward reaction. This is known as forward reaction. And the second part is when ammonia gas is actually breaking down to form nitrogen and hydrogen again. So this is backward reaction, right? This is backward reaction. So there are two types of reactions that are happening over there in reversible reaction. One is forward one and one is backward one. So when both are reactions taking place simultaneously, this type of reaction in chemistry is known as reversible reaction. So if someone asks what is reversible reaction, so you can say that such type of reactions in which forward and backward both type of reactions are taking place, right, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Then the very important thing over this is for suppose if I just have one beaker over here, right? If I have a beaker over here like this, and this beaker should be closed. This beaker should be closed. You need to keep remember many, or you can say that almost every 98% of the reversible reactions are occurring in gases, right? So 98% reaction जो होंगे reversible reaction वो gases के होते हैं, right? Solid के तो होते ही नहीं है, liquid के होंगे थोड़े बहुत जो होंगे. तो 98% reactions आपके पास gases से relate करते हैं reversible reaction. So that is why you must need to have closed system. अगर system close नहीं होगा बच्चों, so the gases can escape from the container, and once the gases are going to be escaping from the container, so there will be a very difficult task for us to maintain the discipline between the molecules, right? तो जब molecules निकलते रहेंगे तो वहां पर एक balance जो create होना चाहिए वो create नहीं हो पाएगा. That is why
ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। तो इफ वी वांट कि यार ये रिएक्शन हो और यहाँ पर किसी तरह का एस्टैब्लिश हो कुछ बैलेंस, तो दिस सिस्टम शुड बी क्लोज, राइट? सो द गैसेस कैन नॉट एस्केप, राइट बच्चों? सो द गैसेस कैन नॉट escape. Is that right, every one of you? Yes. Okay, then for suppose initially I just have hydrogen gas over there. I just put hydrogen gas over there, right? This is hydrogen gas. This is hydrogen gas I have. Then I just add a nitrogen gas over there as well, right? And then I just add these two gases, they start reacting to form ammonia gas, right? So we know that initially we just have hydrogen and nitrogen. Initially we just have hydrogen and nitrogen, so they start reacting together to form ammonia gas. It means initially the forward reaction is faster. The forward reaction is faster, right? Initially the forward reaction is faster because we don't have product initially, right? So forward reaction आपके पास fast हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता the faster reaction is going to be slower, right? And initially we don't have product initially, so that is why the breaking down of product is slower initially. This is slower, and this is going to be move towards faster. It is going to be faster slightly. तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो वाला फास्ट की तरफ जाएगा, फास्ट वाला स्लो की तरफ आएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों का जो स्पीड है वो सेम हो जाएगा, दोनों की जो स्पीड होगी वो सेम हो जाएगी. एंड व्हेन द स्पीड ऑफ both the steps are going to be same, that is actually known as balance of this reaction. And the name of that balance is actually what? This is reversible reaction में कहलाता है ये dynamic equilibrium. ठीक है ना? So what is dynamic equilibrium? Dynamic equilibrium is when the rate of forward reaction become equals to the rate of backward reaction, right? So you can say that when the rate of forward reaction become equal to the rate of backward reaction, become equal to the rate of backward reaction. ठीक है बच्चों? Is that clear, everyone? Yes, everyone is. चलें इसको आप जल्दी से अपने पास. Okay, so when the rate of forward reaction become equals to the rate of backward reaction, it become what? Dynamic equilibrium. इसको dynamic equilibrium बोलते हैं आप. और ये 1 मार्क के लिए डेफिनेशन है, ठीक है ना? अगर वो अगर 2 मार्क्स के लिए पूछता है तो हम एक और बात लिखेंगे इसमें. एक बच्चों बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा. ओके, सो एक्चुअली आज मौसम सही नहीं है और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इस वजह से सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना? एंड सेकंड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट क्या होगा? व्हेन the dynamic equilibrium is going to be established, you just need to keep remember बच्चों कि वहां पर there will be no further change in the concentrations में further change नहीं आएगा, ठीक है ना? जब आप जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन उस वक्त होगी वो चेंज नहीं होगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद, ठीक है ना? So the second point that you need to write over here is, and there would not further change in concentration of reactants and products, right बच्चों? just need to keep remember this कि अब जो आपके पास तैयार हो गया है जिसको हम बोल रहे हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक बार फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो एक बार बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, 2 बार फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो 2 बार बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, 3 बार फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है 3 बार बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है. अब जो भी हो रहा है अब बैलेंस हो गया, एक बैलेंस क्रिएट हो गया, और जो बैलेंस क्रिएट हो गया इसकी वजह से नाउ देयर इज नो मोर चेंज
in the concentration of reactant and products. पहले reactants आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे, product आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी. अब दोनों बीच में आ गए, दोनों की whatever the concentration बराबर है नहीं है, जो भी है अब सेम रहेगी. अब मजीद चेंज नहीं होगी. अगर एक बार टूट भी गया प्रोडक्ट, थोड़ी सी कम हुई, फिर एक बार बन गया, वो वापस बराबर हो गई. फिर दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे, तो दोबारा से वो टूटकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं. तो व्हाटएवर द कंसंट्रेशन एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, नाउ देयर विल बी नो मोर चेंज ओवर देयर. राइट एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. So these 2 points are quite important. You need to keep remember this. And one more point that you need to keep remember that ये reaction कभी stop नहीं होता. आप ये मत समझिएगा कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो रिएक्शन खत्म, अब ये स्टॉप हो गया, दोनों की जो आपके पास कंसंट्रेशन है वो आधी आधी हो गई, अब रिएक्शन नहीं होगा. सो यू जस्ट नीड टू कीप रिमेंबर कि अगर आपको इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना है तो क्लोज सिस्टम होना चाहिए. एंड यू आल्सो नीड टू रिमेंबर दैट कि रिएक्शन नेवर स्टॉप्स. दिस रिएक्शन नेवर स्टॉप. हाँ, ये हो सकता है कि दोनों की स्पीड सेम हो जाए. जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी तो एक बार फॉरवर्ड एक बार बैकवर्ड, दो बार फॉरवर्ड दो बार बैकवर्ड, कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा. इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? Yes, ये sir. सेकंड लाइन के अंदर देयर वुड नॉट, क्या आगे क्या लिखा है चेंज से पहले आपने? There would not further change in concentration of reactants and product. Okay. अब जो भी हो गया सो हो गया, अब मजीद चेंज नहीं आएगा. ठीक है? Yes, every one of you, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. चले चलते हैं. अब द प्रॉब्लम इज दिस कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मतलब रिएक्शन आधा होकर मतलब हो गया, आधा होने के बाद कंसंट्रेशन फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो ये रिएक्शन हम करवाएंगे क्यों? मतलब क्यों करवा रहे हैं? कोई बंदा इसकी इंडस्ट्री कैसे लगा सकता है कि अगर मैं फॉर सपोज अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे अमोनिया गैस की इंडस्ट्री लगानी चाहिए, तो मुझे फायदा कैसे होगा? मुझे तो फायदा ही नहीं होगा. मैं रिएक्टेंट 100% डाल रहा हूँ, प्रोडक्ट मुझे उसकी हाफ मिल रही है या 60% मिल रही है, तो इस तरह तो मेरा नुकसान हो जाएगा. राइट? सो अब ऐसे रिएक्शंस में प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सो देयर आर सम फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. राइट? तो जैसे अभी हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, तो रेट ऑफ रिएक्शन में जो फैक्टर्स हम अप्लाई कर रहे थे, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट, उससे स्पीड हम जो है बढ़ा रहे थे रिएक्शंस की ना, तो दैट वाज कोलिजन थ्योरी. अब जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट बढ़ानी है, रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड की तरफ मूव करना है. हम नहीं चाह रहे कि रिएक्शन पीछे आए, बैकवर्ड नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाए. तो हमें कौन से फैक्टर्स अप्लाई करना पड़ेंगे? फैक्टर्स वही वाले हैं सारे. लेट्स सी अब उनका इफेक्ट रिवर्सिबल रिएक्शंस पर कैसा होगा. राइट? सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फैक्टर, द फैक्टर नंबर 1, व्हिच इज कंसंट्रेशन. दिस इज कंसंट्रेशन. राइट? इससे पहले जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन में बच्चों कंसंट्रेशन का फैक्टर हमने पढ़ा था, वी वर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली. हम उसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, क्योंकि वो ही आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट बनती है. ठीक है ना? बट ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट को भी आप रिएक्टेंट कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन दिस रिएक्शन आर रिएक्टेंट्स, और अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो अमोनिया गैस जो ब्रेक डाउन हो रही है, दैट इज अ रिएक्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो बैकवर्ड रिएक्शन को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, उसके अंदर भी रिएक्टेंट जो होगी वो प्रोडक्ट होगी फॉरवर्ड रिएक्शन की ना. तो यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन लिखा गया है इस वजह से. ठीक है ना? यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पर आप दोनों की बात कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन में, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को कंसीडर करते हो तो प्रोडक्ट इज एक्चुअली द रिएक्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है भाई? सो लेट्स सी क्या होता है. मैं कंसीडर कर रहा हूं आपके पास इक्वेशन ये वाली, देखें. When sulfur dioxide reacts with oxygen, it will form sulfur trioxide. And for the balancing, I just write 2 over here. Right? This is a gas, this is a gas, and this is a gas. And you just need to keep remember, for gases at room temperature and pressure, for gases at room temperature and pressure, mole ratio is actually equal to the volume ratio. यानी कि जैसे हम कंसीडर करते हैं ना, this is 2 moles, this is 1 mole, and this is 2 mole. So you can even consider this in centimeter cube as well, क्योंकि ये gases हैं
गैसेस को आप मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो सेम कंसीडर कर सकते हो। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है 2 मोल्स, सो यू कैन इवन कंसीडर दिस 2 सेंटीमीटर क्यूब और 2 डेसीमीटर क्यूब एज वेल। और इसको आप फिर कह सकते हो इट विल बी 1 डेसीमीटर क्यूब एंड इट विल बी 2 डेसीमीटर क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इट इज टेलिंग अस कि if you have 2 decimeter cube of sulfur dioxide and it reacts with 1 decimeter cube of oxygen, so it definitely produce 2 decimeter cube of sulfur trioxide. So आप मोल रेशियो की तरह गैसेस के लिए वॉल्यूम रेशियो भी कंसीडर कर सकते हो, there will be no issue, right? Is that clear, every one of you? Yes, sir. So let's see. For suppose I am just going to plant an industry, and this industry is actually based on sulfur trioxide. So the formation of sulfur trioxide is very important for us, and the formation of sulfur trioxide is actually reversible reaction. So for suppose अगर मेरे पास यहाँ पर 200 डेसीमीटर क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड मैंने डाली और उसका रिएक्शन मैंने कराया बच्चों 100 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड कितनी बननी चाहिए बच्चों? इट शुड बी 200 डेसीमीटर क्यूब सल्फर ट्राइऑक्साइड एज वेल, राइट? Yes, sir. But the problem is this, the reaction is reversible reaction, so it will not be at 100% to 100 decimeter cube. क्योंकि ये reversible reaction है, so whatever the product is going to be formed, definitely going to be break down again, and there will be a dynamic equilibrium which is going to be established, and there will be the somehow you can say that the product will be half. So it's not all the time the half, but just for suppose we are just having one example of this, so I'm just considering this कि मैंने जब ये रिएक्शन किया तो मेरे पास हाफ प्रोडक्ट मिली मुझे, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल था, तो आधी प्रोडक्ट बनी और आधी क्या हो गई, टूटकर वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना? तो आई जस्ट शॉक्ड जब मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया, यार मुझे बनानी थी 200 डेसीमीटर क्यूब, ये बन गई कितनी 100 डेसीमीटर क्यूब, ये क्या हुआ मेरे साथ? मतलब मैं बनाना चाह रहा था, मैंने पूरी कैलकुलेशन किया, आई एम अ केमिस्ट, तो मैंने देखी इक्वेशन बता रही थी कि 2 सल्फर डाइऑक्साइड जब मिलेगा 1 ऑक्सीजन के साथ तो 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनना चाहिए, एंड आई नो द रूल दैट फॉर गैसेस मोल रेशियो एंड वॉल्यूम रेशियो इज ऑलवेज इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर मैं 200 डेसीमीटर क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड डाल रहा हूं तो डेफिनेटली 200 डेसीमीटर क्यूब सल्फर ट्राइऑक्साइड बननी चाहिए। मैंने सब कुछ सही किया है और आखिरी में मेरे पास प्रोडक्ट आ गई 100 डेसीमीटर क्यूब। यार ये क्या हुआ मेरे साथ? फिर मुझे अचानक नजर पड़ी कि यार ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, ओह दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट इज हाफ, राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर मुझे इसको 200 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस? अभी तो कोई सॉल्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा। पहला सॉल्यूशन क्या हो सकता है जो कि शायद कोई एक बंदा केमिस्ट ना भी हो तो वो भी ये सॉल्यूशन निकाल सकता है। वो क्या करेगा? अब जो भी हुआ सो हो गया, आप क्या कर सकते हैं, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? अगर हमें इसको डबल करना है तो इसको डबल करने के लिए जो रिएक्टेंट्स हमने डाले थे उसको भी डबल करना पड़ेगा। सो इफ वी वर एडिंग 200 डेसीमीटर क्यूब और हमारे पास 100 बनी है, तो अगर हम इसको 400 कर दें बच्चों और इसको हम 200 कर दें, सो प्रोबेबली आपके पास बनना चाहिए 400, क्योंकि ये इक्वेशन बता रही है, लेकिन क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये 400 की जगह आधा बन गया, कितना? 200 डेसीमीटर क्यूब, राइट? Yes, sir. So Yes, you can sir. see this बच्चों over here कि आपके पास ये रिएक्शन अगर फॉर सपोज अगर 200 डाली आपने और 100 डाली तो 200 नहीं बनी, ठीक है, नहीं बनी, लेकिन 100 तो बनी ना, जितनी भी बनी। अगर आपने इसको डबल किया और इसको डबल किया तो इसके डबल करने से आपके पास जितनी भी बनी, चाहे हाफ ही बनी, 50% ही बनी, लेकिन हो तो फिर भी गई ना डबल, है ना? Yes, sir. So the very first thing that you need to keep remember, the factor that can affect your productivity is concentration. So the simple is this, you can say that if concentration of reactants increases, right? If the concentration of reactant increase, तो आपके पास क्या होगा? रिएक्शन इज मूविंग टूवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, ठीक है ना? जब आप कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की बढ़ाओगे तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बढ़ेगी, और जब प्रोडक्ट बढ़ती है तो उसको हम बोलें कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, क्योंकि मोर प्रोडक्ट बन रही है ना। सो यू कैन से दैट मोर प्रोडक्ट फॉर्म एंड
reaction move या reaction shift towards right hand side, right बच्चों? Is that right? Yes, sir. Or you can even say that इस reaction को आप क्या बोल सकते हो? Position of equilibrium भी आप इसको बोल सकते हो. That the position of equilibrium shift towards right hand side या shift towards product side या आप कह सकते हो shift towards right hand side या product side या forward reaction. इन तीनों में से कोई सा भी लफ्ज यूज कर सकते हो. और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. आप राइट हैंड साइड भी बोल सकते हो, आप प्रोडक्ट साइड भी बोल सकते हो, ठीक है ना. और आप क्या कह सकते हो, एक और लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हो, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्स. यू कैन इवन से दैट फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्स. तो आप इन तीनों में से कोई सा भी डायरेक्शन आप यूज कर सकते हो. दे ऑल आर सेम, राइट एवरी वन ऑफ यू. Right? Yes, sir. And the same thing for the decrement as well. अगर आप increase कर रहे हो concentration reactant की तो reaction कहाँ जा रहा है? Product side पे. अगर आप concentration decrease कर दोगे तो वापस reactant side पे आ जाएगा, backward reaction होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना. और दूसरा ये कि अगर आप product increase कर दोगे तो भी reactant side पे आएगा. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. Just look at over there. For example, if I just maintain a balance over there. So this is actually one of the balance over here, right? यहाँ reactants मौजूद है, यहाँ पर products मौजूद है, for suppose, right? So if I am increasing this one, if I am increasing reactant, तो reaction कहाँ चला जाएगा बच्चों? Product side पर, सही है. और अगर मैं product increase कर दूं, तो reaction कहाँ जाएगा? Reactant side पे. Is that right? Yes. Yes, sir. You can even say that if concentration of product increases, if concentration of product increases, so क्या होगा आपके पास? Reaction equilibrium shift towards left hand side, right बच्चों? And for suppose मैं reactants निकाल लूं, अगर मैं इसको withdraw कर लूं, तो फिर ये साइड लाइटर हो जाएगी. जब ये साइड लाइटर हो जाएगी तो लाइटर होने के बाद रिएक्शन वापस यहीं आएगा, इस तरफ ही आएगा, ठीक है ना. सो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आप डिक्रीज कर दें, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, अगर आप इसको कम करते हैं, तब भी रिएक्शन कहाँ आएगा बच्चों? रिएक्शन कम्स बैकवर्ड, राइट, और लेफ्ट हैंड साइड. और अगर आप प्रोडक्ट कम करते हैं, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स प्रोडक्ट, है ना. वो आपके पास प्रोडक्ट साइड पे आ जाएगा, राइट हैंड साइड पर आ जाएगा. सो यू जस्ट नीड टू कीप रिमेंबर, जो चीज लाइटर होगी रिएक्शन उस तरफ ही जाएगा. अगर आप क्या ऐड कर रहे हैं, अगर आप ऐड कर रहे हैं रिएक्टेंट, तो आप देखें प्रोडक्ट साइड लाइटर हो गई तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ चला गया. अब अगर आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड दोबारा लाइटर हो गई, अब रिएक्शन दोबारा लाइटर की तरफ जाएगा, लाइट वेट की तरफ जाएगा, तो इट विल मूव टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड. अगर आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो फिर रिएक्टेंट साइड लाइटर हो गई, अब रिएक्शन रिएक्टेंट साइड पे चला जाएगा. अगर आप रिएक्टेंट निकाल रहे हो, कम कर रहे हो, तो फिर वो रिएक्टेंट साइड लाइटर हो गई, रिएक्शन फिर रिएक्टेंट साइड पर आएगा, ठीक है ना. तो दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर, द वन व्हिच इज गोइंग टू बी लाइटर, reaction equilibrium, the position of equilibrium will shift towards the lighter part, right bacho? Yes, sir. So let's have one of the example for this. For suppose if I have a reaction in which hydrogen is reacting with nitrogen gas and it will forming what? Ammonia gas. Yes, can you please tell me bacho, agar main hydrogen add karta hu, if hydrogen is added to the reaction कहाँ जाएगा बच्चों? Right hand side. Yes, the reaction will move towards right hand side. Very good. For suppose अगर मैं इसमें नाइट्रोजन ऐड करता हूँ तो रिएक्शन कहाँ जाएगा बच्चों? Right hand Same Right. right. Very good. For suppose इस रिएक्शन में अगर मैं अमोनिया गैस ऐड करता हूँ तो बच्चों रिएक्शन कहाँ जाएगा? left hand side. लेफ्ट हैंड साइड. वेरी गुड. फॉर सपोज अगर मैं इस रिएक्शन में से हाइड्रोजन
रिमूव करता हूं तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? Right hand. Left hand side. इट विल बी लेफ्ट हैंड साइड. वेरी गुड. अगर मैं इसके अंदर से बच्चों नाइट्रोजन रिमूव करता हूं तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? Right hand side. No, left left the left one, yes, the one which is lighter, it will move towards over that side ना. तो नाइट्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो नाइट्रोजन वाली साइड लाइटर, so it will comes left hand side, right? And if I remove ammonia gas from there, so the reaction shifts towards Right hand side. shifts towards right hand side. So this is the thing that you need to keep remember, right? Every one of you, is that clear? Yes, sir. Any problem to any one of you? No, sir. no sir यस, ठीक है. तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू आगे पीछे करना है, डेफिनेटली यार कोई भी नहीं चाहता लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा. तो ये जो 3 वाले हैं ये तो हमें नहीं चाहिए होंगे, बट यू नीड टू कीप रिमेंबर दीज ना. हम चाहते हैं कि रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा बने, तो वी ऑल वांट कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए. तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो आपके पास रिएक्शन में ईल्ड इंक्रीज होगी. ईल्ड किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट को. सो इफ द रिएक्शन इज मूविंग राइट हैंड साइड, सो द ईल्ड इज गोइंग टू बी इंक्रीज, राइट बच्चों? And if the reaction moving towards left hand side, so definitely yield is going to be decreased. So you just need to keep remember this as well. और आपने याद रखना है कि वो जिस पैटर्न में आपसे सवाल पूछेगा, you need to answer in that pattern. For suppose if they are asking state and explain the in the form of position of equilibrium, so you need to answer in terms of position of equilibrium. You will say that the reaction, the position of equilibrium shifts towards right hand side या product side या forward reaction, इस तरह लिखेंगे. For suppose वो कह रहा है state and explain in terms of yield of the reaction, so you will answer. फिर वहां पर आपको position नहीं लिखनी, you just need to say that the yield of the reaction increases because the reaction is moving forward. ठीक है ना? ये कहानी होती है. Is that clear every one of you? Yes, sir. और वो इसी पार्ट में वो आपसे ये भी पूछ सकता है. फॉर सपोज state and explain in terms of collision what happened to the rate of reaction. Now if they ask for the rate of reaction, so you need to tell that if we are increasing the concentration of reactants, so the chances of collision will be increased because the number of particles per unit volume is going to be increased, so the rate of reaction increases. So you can answer the rate of reaction with this question as well. आप इसी में rate of reaction भी बता सकते हो, but again you need to be very conscious about question कि वो पूछ क्या रहा है. अगर वो rate of reaction पूछ रहा है तो you need to answer rate of reaction. अगर वो yield पूछ रहा है तो you need to answer according to yield. और अगर वो पूछ रहा है आपसे position of equilibrium, तो you need to answer according to that. Right, every one of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Chale, so let's talk about the second factor, and the second factor is actually what? Pressure. I'm not talking about temperature in today's class. We will talk about this in the next class because temperature का थोड़ा सा टेढ़ा है, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे. अभी pressure आसान है तो उसको कर लेते हैं. Pressure is only for gases, we know that. We also talk about this in rate of reaction कि भाई अगर rate of reaction आपको ऐसे reactions का बढ़ाना है कि जिसके अंदर आपके पास सिर्फ gases हों, तो ही reactant gases हों, तो ही आप pressure apply कर सकते हैं. Otherwise pressure का कोई काम नहीं है. ठीक है ना? तो for suppose if you talk about reversible reaction, अगर आप reversible reaction की बात करते हैं, तो for suppose again I am considering this equation, sulfur dioxide is reacting with oxygen to produce sulfur trioxide. So you can see this that all are gases. This one is gas, this one is gas, and this one is gas. So the pressure factor can be applicable for this reaction, right? So what you need to keep remember for pressure, the pressure, if you increase pressure, if pressure increases, but you just need to keep remember equilibrium or the position of equilibrium. You just need to keep remember the position of equilibrium. Position of equilibrium is going to be shift towards the less number of gaseous moles. So keep remember the position of equilibrium shifts toward the less number of gaseous mole. Toward the less number of gaseous mole. Yes, bacho, got this or not? Yes, sir.
Just look at over there. The total number of moles over here is 2 and plus 1, 3. So on the reactant side, we have 3 moles. And over here on the product side, we have 2 moles. So if you apply pressure on this equation, so definitely the reaction is going to be forward, right? And we want this. तो अगर इस reaction में मैं चाहूँ कि मेरे पास product ज़्यादा बन जाए, अगर इस reaction में और ये reaction हो मेरे पास और मैं चाहूँ कि product ज़्यादा बन जाए, so I can apply pressure. I can increase pressure, and increased pressure can shift the equilibrium towards right hand side. And we also know that it will shift the equilibrium towards right hand side, and also the yield is going to be increased, and also the rate of reaction is going to be increased because all the reactants are gases, right? So pressure is very much important for this equation. एक तो yield भी बढ़ाएगा, forward reaction भी move करेगा, और आपके पास rate of reaction को भी बढ़ाएगा. So I think pressure should be very important for this reaction, right? Every one of you, हर काम कर रहा है pressure यहाँ पर, ठीक है? Yes, every one of you. सर आपने वो क्या लिखा है? Position of equilibrium shifts towards the के बाद Less number of gaseous moles, right? Okay. Okay, one more time, but you just look at over here. For suppose this is a equation: nitrogen reacting with 3 hydrogen molecules, and they are forming what? Ammonia gas. Yes, every one of you, if I want that more ammonia gas will be formed, so what should I do with pressure? Increase the pressure Yes, what I need to on do? the reactant side. Yes. No. Pressure is going to be applicable on the whole reaction, right? You just need to keep remember कि जो reaction हो रहा है, ये सब कुछ इसी में मौजूद है. नाइट्रोजन भी इसी में मौजूद है, हाइड्रोजन भी इसी में है, अमोनिया भी इसी में है. तो आप जब प्रेशर लगाओगे तो इस पूरे पे लगाओगे. ऐसा नहीं है कि आप रिएक्टेंट साइड पे लगा रहे हो या प्रोडक्ट साइड पे लगा रहे हो. आप प्रेशर ओवरऑल रिएक्शन मिक्सचर पे लगा रहे हो. इसको बोलते हैं रिएक्शन मिक्सचर, जिसमें सब कुछ होता है. रिएक्शन मिक्सचर. तो जो आप प्रेशर लगा रहे हो आप पूरे पे लगा रहे हो. रिएक्शन खुद ब खुद लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा. So you can see over here right now 1 plus 3. Total we have 4 moles on the reactant side and the product side having 2 moles. So in such reactions in which the number of gaseous moles are lesser on right hand side, so we can apply pressure over there to increase the yield. Right, Bacho? Yes, sir. And for suppose we have such reactions. We have the such reactions in which this condition we have. For suppose, just look at over here. In such reactions जिसमें product side पे number of moles कम है, ठीक है ना? तो अगर आप pressure लगाएंगे तो reaction कहाँ चला जाएगा? Forward चला जाएगा. ठीक है, that's fine. But for suppose अगर ये equation में लिख देता उल्टी, for suppose ये equation में लिख देता उल्टी, बच्चों कैसे? इस तरह से लिख देता मैं N2O4, right, forming 2NO2. अब आप देखें कि अगर मेरी main product nitrogen dioxide है, so you can see this that the number of moles over there are greater on the right hand side. अगर मुझे product चाहिए तो मुझे pressure का क्या करना पड़ेगा? Should I increase that or decrease that? Decrease. Yes, you need to keep remember if the number of moles are greater on product side, so you can decrease pressure as well. So the position of equilibrium shift towards greater number of gaseous moles. Shift towards greater number of gaseous moles. Right, bacho? Yes, sir. And one more very important thing about this one, for suppose if we have such reactions, like if we have such reaction, hydrogen reacting with chlorine forming hydrogen chloride. Just look at over there. This is gaseous, and this is also gaseous. So on the reactant side, we have total 2 moles, and on the product side, we also have 2 moles. So in such reactions in which number of moles on both sides are same, so you can say that no effect of pressure in such reactions, right? There is no effect of pressure in such equations where the number of moles on both sides are same, right, every one of you? Yes, sir. Any problem to any one of you? All clear? Sir, can you explain N2O4 again?
Yes, N2O4 is, you can see this, that we have one molecule on the reactant side and we have two molecules on the right hand side. So actually the main thing is product na. So for suppose if you are doing this reaction, so the main thing is your product. So you want के product ज़्यादा बने. So product side पे number of moles ज़्यादा हैं. तो if you want के reaction उस तरफ जाए, so you need to decrease the pressure. अगर आप pressure बढ़ाओगे तो reaction left hand side पे चला जाएगा ना. Yes. Less number of moles की वजह से. ठीक है ना? चलें देखें. For suppose बच्चों आपके पास ये reaction है. Just like H2 reacting with for suppose F2 gives you 2HF. बताएं प्रेशर लगाना चाहिए, ज्यादा लगाना चाहिए, कम लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए? No pressure. Yes, there is no effect of pressure, so we don't need to apply pressure over there. No effect of pressure. Very good, because the number of moles are same. So ये अगर आपसे पूछा जाए पेपर में 2 marks के लिए, so you can say that there is no effect of pressure because the number of moles of gases on both sides are same. 1 mark for the answer, right answer, and one mark for the reason. So no effect का 1 mark मिलेगा और दूसरा mark आपको मिलेगा because the number of moles of gases on both sides are same. Right, every one of you? Yes, sir. Okay, so this is actually what there are 2 effects that we discuss in today's class, and बाकी वाले जो 2 हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो आपको पहले ये 2 याद कर लेने हैं, ठीक है ना? आपने अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को याद कर लेना है. जब आप इसको अच्छे से याद कर लोगे तो आप देखेंगे कि ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत